Hello and welcome guys back to the channel once again, and I hope you all are doing absolutely fine. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे why I have kept a Sony DualShock 1 controller over here. So guys, I'm gonna make a full comparison video of DualShock 1, DualShock 2, DualShock 3 and DualShock 4. So what's it guys? Is it a good topic? So guys, let's compare and let's see the generations of Sony changing his controllers. So starting with the DualShock 1. Actually, this is not the first controller Sony made. Before it, there was a controller without these. I was not. I'm like very hard to find that controllers. I have like मैंने कितनी कोशिश की वो controllers में ढूंढने की, but I didn't got that controllers. So I have to run my life with this. So this is the first controller in my collection of the Sony controllers. Actually, Xbox One के भी कुछ special edition controllers है that I'm gonna show you in my controller collection video. So अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है. ये सोनी का PS1 कंट्रोलर है. जैसा कि आप देख सकते हो PS1 लिखा हुआ है साफ साफ इतने बड़े बड़े शब्दों में. और या सोनी ने ये बटन्स को मतलब एक जगह प्लेस किया था. देयर वाज नो कट आउट फ्रॉम हियर, सो लाइक ये नीचे जा सकते हैं. दिस वाज लाइक एंड दिस वाज नॉट अ डुअल शॉक कंट्रोलर फॉर श्योर, बिकॉज इसमें कुछ भी वाइब्रेशन वाला फीलिंग नहीं था. इट ऑल स्टार्टेड विद द डुअल शॉक 2. I think there was a DualShock 1 controller, but there's no written DualShock over here. So I actually don't know if it's a DualShock, but I think it's a DualShock. So चलो. तो दिस वॉज अ PS1 कंट्रोलर विथ एनालॉग स्टिक्स. यहाँ पर आप ये एनालॉग बटन देख सकते हो. इफ़ यू वांट ऑफ इट यू कैन ऑफ इट, इफ यू ऑन इट यू कैन ऑन इट. सो बिना एनालॉग के यूज़ करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, एनालॉग के साथ यूज़ करना है तो इसको ऑन कर सकते हो. द डी पैड, द एक्स, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल, स्टार्ट एंड सेलेक्ट बटन स्टिल देयर, L1 L2 R1 R2 और कुछ भी नहीं था इस कंट्रोलर के अंदर. दिस वॉज वेरी हार्ड फाइंड टू मी, बट आई फाउंड इट इन परफेक्ट कंडीशन. एक्चुअली मुझे PS1 के साथ मिला था, विच आई बॉट, विच आई एम गोना मेक अ रिव्यू फॉर श्योर आफ्टर सम टाइम. तो अभी देख सकते हो आप कंट्रोलर्स इन अ ग्रेट कंडीशन. इट्स अ वाइट कंट्रोलर. दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वाइट कंट्रोलर्स विच सोनी मेड. आफ्टर दैट सारे ब्लैक थे, बट some special editions were still white. I think there's a white controller for DualShock 4, but I'm not really sure about that. So yeah, this was a DualShock 1. Actually इसके features कुछ भी नहीं थे. This was a simple controller with analog. Before there was a controller without analog. Just imagine the controller without analog like this, like no analogs over here. So the controller used to look like the upper thing like this. No, this thing. Just I'm gonna cut out that thing. Yeah. So that's what without analog with analog. So या मे बी इफ़ आई गेट मैं अगर मेरे को एनालॉग बिना एनालॉग वाला मिल गया तो या आई कुड डू इट. ऑफ कोर्स दिस वाज वायर्ड. मैं वायर्स को टाई करके रखा हूँ, so I just don't want to make them a mess. So yeah, let's go with the DualShock 2. This was the first black controller Sony made and people were so excited for this. इसके अंदर भी आपको एनालॉग बटन दिख सकता है to on and off the analog sticks. Start and select for sure in every Sony controller. T-pad, square, circle, X and triangle, R1, R2, L1, L2. This was a more clicky button, as you can see. मैं आपको बता दूँ. And the controllers used to noise like this with my mic. This was not that clicky as the DualShock 1. If I want to show you like this. So you saw it. So that's what I think it was. So this is a DualShock 2. Everything as the same of DualShock 1. This was with a vibration feeling. I think इसमें vibration थी, जैसे कि आप देख सकते हो DualShock 2. This was a, I don't know, it was a V1 or V2. DualShock 2 में I think there was no V1 V2. As usual wired, and I like this like matte and gloss finishes on my PS2 also.
So this was of course with my PS2 as I showed you in my previous video. If you didn't saw it, आई बटन पे है, देख लो जाकर. Okay. So let's go with the DualShock 3, the first wireless controller. Oh yeah, damn homie. मैंने इसके ऊपर अपना ये grip लगा हुआ है because I use this so much. So yeah, T-pad as usual. अब एनालॉग का कोई बटन नहीं था ऑन एंड ऑफ का, so you have to compulsory use an analog. Start and select for sure. On button, charging port, mini USB था. First time this thing, I like this thing so much. I'm missing DualShock 1 and 2. Of course, the same gesture controllers X, square, Y, circle and triangle. अब इधर लिखा हुआ है. Now let me show you. This is a 6-axis DualShock 3 controller. इसमें controller था which was just a 6-axis controller, no DualShock 3. Yeah. 6-axis means आप ऐसा ऐसा करोगे तो you mean you can like ये controller जिस जगह आप हिला रहे हो when you're driving a bike or something, you can handle with this like this. So yeah. So this was also clicky if I'm not wrong, like this. Let me show you. Not that clicky. Of course R1 and R1 will be clicky, but not that much clicky as like a DualShock 1 and 2. Finally the last one, the DualShock 4, and the DualShock 5 is also gonna come. So yeah, उसके मैं PS5 पे एक particular video बनाऊंगा, so stay tuned for that. That's gonna be for sure. And yeah, so guys, let's go. So this is a freaking DualShock 4 controller. It changed all over here. So guys, सोनी ने फाइनल डिज़ाइन सोचा है कि यार अभी डिज़ाइन बदल ही देता हूँ बिकॉज पीपल आर लाइक टेरेबल विद दैट ओल्ड डिज़ाइन. तो सोनी ने क्या किया इस बार, द सेम बटन्स ओवर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, टी पैड ओवर हियर, analog sticks over here, the PlayStation button over here to on and off, speaker for the first time in a controller. There was a speaker over here and I think I messed up the speaker. It's not working. स्पीकर मेरा कंट्रोल पे स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, पानी चला गया शायद. दिस इज़ अ फ्रिकिंग टच पैड इन हियर. सो गाइस एक्चुअली दिस इज़ नॉट यूज मच इन ऑल द गेम्स, जस्ट एक गेम में यूज़ होता है एंड दैट्स नोन एज द इन्फेमस सेकंड सन, जो कि बहुत कम ये टच पैड यूज़ हुआ है. एंड इधर है शेयर बटन एंड ऑप्शंस बटन, जैसे आप देख सकते हो. स्टार्ट एंड सेलेक्ट निकाल कर शेयर एंड ऑप्शंस डाल दिया सोनी ने. दैट वाज अ फ्रिकिंग चेंज. अभी चार्ज नहीं है कंट्रोलर में बिकॉज आई डेंट प्ले द PlayStation 4 फॉर अ वाइल, सो द चार्ज इज गॉन, सो इट्स नॉट ओपनिंग. बट स्टिल micro USB to charge this. Oh yeah, this time they changed the design. Like आपकी उंगली perfectly बैठ कर नीचे जाती है, so it's like great for now. And quiet buttons, not clicky as before. This is the quietest controller I feel to play. किसी को आप मैच भी नहीं कर सकते. ओह ये someone over here स्टिक किया है मैंने स्टिकर्स just for a cool look for me. This ball stickers, I thought this is not a special edition, the blue special edition. तो मैंने सोचा मैं अपना स्पेशल एडिशन बना देता हूँ, FCB स्पेशल एडिशन. तो मैंने FCB का स्टिकर लगा दिया. एंड बॉल्स हो गई है, पीछे कुछ अलग ही लग रहा है, बट स्टिल नो प्रॉब्लम. सो या दिस वॉज अ फ्रिकन DualShock. अब इसके भी बटन क्लिक्स आपको सुना ही देता हूँ, सो दैट यू गेट टू नो, गेट an आइडिया ऑफ दैट. सो इसमें ज़्यादा चेंजेस थे फॉर श्योर फ्रॉम DualShock 3. लाइक दिस कंट्रोलर बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इन DualShock 4, बट आई थिंक द डिज़ाइन वॉज सेम स्टिल. कुछ चेंजेस थे लाइक स्पीकर, टी पैड, सॉरी नॉट टी पैड, टच पैड, कन्फ्यूज. ऑप्शंस एंड शेयर बटन, स्टार्ट एंड सेलेक्ट से ऑप्शंस एंड शेयर हो गया. एंड या it was a little of a like heavy controller, a rugged controller. So yeah, it's expensive too. 4,000 रुपये का कंट्रोलर है. PS3 का 1,000 में, और ये PS2 और PS1 का तो आपको 500, 200, 500 तक मिल जाएगा इफ़ यू गेट इट फॉर सेकेंड हैंड. फर्स्ट हैंड तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. PS2 का शायद मिल जाए फर्स्ट हैंड, दैट्स ऑल्सो फॉर 400-500 ऑन Amazon. तो चलो गाइस, मैं आपको इसके बटन क्लिक्स बता देता हूँ. This is a freaking analog that doesn't make sounds. Keypad doesn't make sounds. Share button, it's like having a clicky feel. Touchpad doesn't have sound. Nothing.
टेक्स्ट स्क्वायर देख सकते हो, सारे बटन दबा little of sound which I can bear. There's a little of sound which I can barely hear. So L1, okay, there's a freaking sound in L2. That's when you put it down and leave it like this. Okay, like this. R2 में कम है, R1 में तो है भी नहीं. Yeah, so the controller. I have put a freaking, what's this known as, a grip on here, because this is not the this is not I use it much, but I use this one, so I've kept it over here. It's a great grip on my PS3 2 controller, because I use them both barely. I think so. I use PS4 more than PS3, that's for sure. So guys, a DualShock 4, which is the latest one, which I have to keep in the front. A DualShock 3, which is the oldest. Okay, DualShock 2, which is more old. A DualShock 1 older than that. So 4, 3, 2, 1. That's what it is. So guys, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed, don't forget to hit the like button. Subscribe to this freaking channel if you didn't. यार सब्सक्राइब करके जाओ यार गाइस, बिकॉज मैंने इतने अच्छे वीडियो बनाए. मैंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बात की इस वीडियो में. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी. चलो गाइस, दिस वाज अ क्विक वीडियो. अब मैं इसका इंस्पिरेशन बताता हूँ. इट वाज इंस्पायर्ड बाय पापी जी फंक. Maybe I'm gonna promote the channel over here, or it doesn't need a promotion because वीडियोस तो इंग्लिश में ही बनती है उसकी. इफ़ यू वांट टू वॉच, यू कैन सर्च पापी जी फंक, इज़ फेमस. सो मैंने उसकी वीडियो देखकर इंस्पायर हुआ, एंड आई वाज लाइक लेट्स मेक अ कंट्रोलर लाइक what its history of PlayStation controllers, same as me but in Hindi, kind of Hindi. हिंदी तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात किया. बट just leave it down guys. That was my information, what I know about this controllers. अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जाने से पहले बेल नोटिफिकेशन दबा के जाना ना भूलना. एंड दिस चैनल इज़ मेड फॉर यू ऑल गाइज. सो या, सब्सक्राइब इट, एंड या, feel me as a brother. Ask any questions in the comment section down below. I'm not gonna regret it. I'm gonna definitely reply to you all guys. So see you in the next one. Take care. Bye bye. Peace. And yeah. And by the way, I'm using a mic, so maybe आपको आवाज़ थोड़ी सी cool या अच्छी आ रही होगी. So my mic setup is a great one. तो मैं आपको बता दूँ, my mic setup is like I have bought a converter for a mic, a USB split, a USB splitter, what to call it, headphone jack splitter. There's a one for the sound coming, the output, and one for the mic thingy. तो मैंने mic में अपना ये generic mic डाला है, तो it's working. So yeah, by the way, you can hear me guys. Yo, bye, see you in the next one. Take care, bye bye, peace, bye. Yo, and like, share, subscribe, comment. Also I'm gonna smash your face guys. Smash नहीं, पाप लगेगा भाइयों. I don't know from what I got this. Yeah, see you in the next one. Take care. Bye bye. Peace. Yeah.